A very warm welcome to one and all present here. I, Sachin Motwani, President, GTBIT Finishing School, along with my team, welcome you all to the second webinar in the series of career development webinars being organized by GFS in collaboration with the Time Institute. A brief about GFS with the vision to holistic development of students, which is the cornerstone of personal, academic, and career success. We envisage having a positive and enhancing influence on every student, faculty, and staff member during their course of stay and experience at GTBIT. Starting in 2012, it has grown a lot outside the campus and currently has a team of 15 dedicated executive student members and our counselor Seema Singh. Our today's speaker, Mr. Atul Gupta, is the product head study abroad courses at Time, MBA in Marketing and International Business, BSc Honours from DU. He has 10 plus years of experience in guiding and mentoring students for study abroad and various career avenues after class 12, graduation, etc. He has worked with organizations like Aajtak, Airtel, etc. Hello, sir. Welcome. You may start with your program. Okay, thank you, Sachin. Welcome everyone. So today's session is all about GMAT. Okay, so we'll talk about the GMAT exam. We'll talk about the career revenues through the GMAT exam, when to take the GMAT exam. Okay, so these things we are going to cover up. If you got any queries, you can unmute your mic and you can speak up your queries. In between, I would look forward to if there's something in the chat box. So I would take up that also. Okay, so welcome all of you. So let us start with today's session. So we start with the concept about GMAT. So what GMAT says, a whole world of opportunities await you. Be it India, be it abroad, be it US, be it France, be it UK, Singapore, Australia. So there are immense opportunities that are available throughout the globe with the GMAT exam. All the aspiring students who are looking forward for careers into management, be it just after graduation or who are looking for with work experience, then looking forward for doing their management programs. So all such kind of programs are available. So it is purely up to you what kind of program is available for you, you are eligible for, and you can look forward for applying for that particular program. Okay. About the GMAT exam, it is an exam conducted by a body which is known as GMAC. Okay. Graduate Management Admission Council, it is known as. It is a link between the student and the B school. Okay, so GMAC works as an intermediate between this B school and the student. What GMAC does, that they will conduct an examination. You will get a score. Now GMAC has two roles: conducting the exam, and second is score reporting. So once you get your score, now you have to use the services of GMAC to send your score to the colleges so that your authenticated scores are going to the college. There is no cheating around. No one can, the college will not accept any score which is directly reported to the college. So that score should be routed through GMAC. So that prevents a lot of cheating across regarding people sending across wrong scores, the scores which are not valid. They can just you cannot increase your score and send it to any B school seeing that ki is score ko kaun check karega. So that kind of thing is not there. Okay, so scores are very authenticated. The process of examination is very authenticated. Okay, so B schools are very confident about the GMAT exam. Okay, the score of the GMAT exam varies from a minimum of 200 and it goes up to a maximum of 800 points. Okay, and it varies on a 10-point increment. That means the scores are multiple of 10. So your score could be 7010, 720, 730, 740, but there is no score like 706 or 714. So there is no score like this. Okay, all scores are multiple of 10. The good thing about the GMAT score that it is valid for 5 years. So if you are into your graduation right now, so you can take your GMAT exam right now, apply to B schools when you are in graduation. If you do not make it through, then you can still use your score next year. Agar tab bhi nahi hua, so then also next year also.
the scores are valid. You can add on work experience after your graduation and then still also use that score. Okay, there are a lot of students who take their score when they're in graduation because the student is into study mode. So they prepare at this particular moment and then keep the score and apply through with that score to all of this. When you go for your GMAT exam, you get to apply to send your scores to 5B school, which is free of cost. Okay, so your exam score has the fees for 5B school score reporting plus the exam conduction fees. So these are the two things that are there in your exam fees. Okay, this is slightly about the exam section, but I'm going to cover it up in the next slide. Okay, this gives you much more detailed information about the GMAT exam. See, this is the GMAT exam. Okay, there are 4 sections in the GMAT exam, and this is the order also. The first section is analytical writing assessment test, which is for 30 minutes. Okay, it is something like the reading comprehensions that you have done in your school. Okay, you will get a passage, you will get a question, and after that you have to answer it. So the total duration for reading the passage, understanding the question, and typing your answer. Okay, you have to type an answer, and typing your answer, the total duration is 30 minutes. Your score varies from 0 to 6, and a 4 and above score is a good score. Okay, supposedly if a student gets 4, so he or she has done his job. That is how it is. 5 score, then also your job is done. But something less than 4 is which is not acceptable. Okay, so that is a low score. Okay, that is a low score. Something less than 4 is a low score. Then comes is another section which is known as integrated reasoning. Okay, integrated reasoning is having 12 questions, and every question is having a subpart A and B. That means the duration for this section is 30 minutes. That means in total 30 minutes you will be doing 24 questions. The time given to per question is pretty less. Okay, and the scoring varies from 1 to 12 in this section, but you will be getting out of this 12, scoring varies from 1 to 8, but you will be getting only 8 questions which are out of the 12 questions which are there, only 8 questions which have marks. 4 questions in this section out of the 12 questions which are asked, they are experimental in nature. That means you do not know which question is experimental, but you have to do all the questions in that sequence, first to 12th. Okay, but you do not know which question will be fetching you marks. And on top of it, this whole section is presently experimental in nature. So even if you get score 1 or you can get a score of 8, it does not matter. It is not going to, the person getting 8 will not be getting any additional point of getting a selection into a B school. So the B schools aren't considering your IR scores as of now, as the IR section in itself is an experimental section. Okay. After this 1 hour of exam, then you get a break. Okay, you get an 8-minute break, so you can go outside, have a fresh air and something like it, and you can come back. After 8 minutes starts the quantitative ability section. Okay, now quant and verbal, these are the 2 most important sections in the GMAT exam. Your 800 score, the score that you get out of 800, is made up of quant and verbal scores. So a combination of quant and verbal is going to give you that score out of 800. So they are the most important part of the GMAT exam. Okay. Now what comes in quant? In quant, you'll get questions on problem solving and you'll get questions on data sufficiency. You'll be getting some 15-16 questions on problem solving and you'll be getting some 14-15 questions on data sufficiency. So they both are equally matched. Okay, so equal representation of problem solving questions and equal representation of data sufficiency questions. For us in the GMAT exam, for Indians specifically, the quant in the GMAT exam is very easy. Okay, students are able to score very high on the GMAT quant. This makes up the base for us. For example,
We are getting 31 questions and time given to us is 62 minutes. Now, how does this exam behaves? The GMAT exam is computer adaptive in nature. So your first question supposedly comes to be an easy question. Supposedly I give you a question 5 into 25. So that makes up 125. Now I ask you 125 into 12. Okay. So 125 into 12. What could be the answer? Anyone? Would anyone like to speak? 125 into 12. 125 into 12 is 1500. Now if I ask you 1500 into 7, what would be the answer? Okay. So the level of the questions is going to increase. Now you answer it 1500 into 7 is 10500. Okay. Now if I again increase 10500 into 16, so the level of the questions as you respond correctly, the level will increase. That means the questions that are coming to you, the exam is computer adaptive in nature. Okay, it is adapting to your responses. You respond to a particular question, the next, and you responded right, the next question, the level increases. But you, if answer the question wrong, your level remains same or the level of the question drops. Okay. And for Indians, this is a pretty easy section. Now, out of the total 800 points that are there, 400 points are for quant and 400 points are for verbal. Indian students are able to score 400 out of 400 very easily. Okay, some 90% of the Indian students are able to score 400 out of 400. So that makes us to focus less on quant but more on verbal. Okay, because for us the verbal ability section is difficult. Why difficult? Because we are competing with those students whose mother tongue is English. So that is why the verbal section in the GMAT exam is difficult for us. Even if you see the number of questions that are increased, that is from 31 to 36 questions. Whereas the duration in the quantitative ability section, it has increased from 62 to 65 minutes. Okay. So questions have increased by 5 and time has increased by only 3, whereas it should have been increased by at least 10 points, 10 minutes. So we are getting less than 2 minutes per verbal ability section. Okay. So in verbal, what comes? Verbal, there are 3 types of questions that come. That is reading comprehension, sentence correction, and critical reasoning. So these are the 3 areas that comes in the verbal ability section. Challenge for Indians is that most of students, when they take up this exam, out of the 400 points, students are able to score up to 250. Okay. So that makes up, if I add up 400 and 250, that makes my score out of 800 to be somewhere around 650. And 650 is not that great a score which is required by B schools. B schools require a score above 700 in the GMAT exam. Okay. So students should be looking forward for scoring more than 700. So I need to work in order to get that 700. I need to work a lot on my verbal. Okay. I should be looking forward to score something like 730, 740. So just another 70, 80 points that is required for me to score in my verbal. That requires a lot of effort. I'm still not spoken about something like getting a 800 out of 800. See, if any student is very good on scoring in verbal and you can ace 800 out of 800, that is excellent, well, superb. But even if I'm getting something like 700, 710, I can apply to any B school in the world. No college is going to say कि मेरा score कम है. And because of my score, I cannot apply to any particular B school. Okay, is that clear? Let me see if there are some questions in the chat box. Okay, none. So let me move on to my presentation now.
Fine. So further, just move to a slide. Okay, cover up this also. In the exam, we just saw that there is a default order, which is AWA, then IR, then QA, then VA. But GMAT gives us another flexibility that we can change the order of the sections. Okay, how we can change the order of the sections? Just a second. I can change the order of the section. I can take verbal first, then I can have a break of 8 minutes, then I can take quant first, then IR, then AWS. So this is an option one. So why they are giving this option? Because there are a lot of students who would like to first get into the exam with a difficult section, then move on to slightly easier sections. So there are a lot of students who like to take the exam like this. Then you can also have another permutation combination. You can have quant first, then verbal, then IR, then AWA. So it is purely up to you. What is the kind of combination that you want in your examination? Okay, is that clear? So GMAT gives you a lot of flexibilities. The benefit of these flexibilities is that you do not want to pressurize any student. They would like to ask the student, kindly come over, take the exam, and then enjoy the exam. Do not get pressurized by. Usually, a lot of students get under the pressure that exam is going to be very tough, but that is not the scenario with the GMAT exam. They want to understand the student level, but the exam as such is providing flexibilities, and they would like to make the exam easier for the student. Rather than run away, they would like the student to come over and attempt the exam. Okay. So this is really good about the exam. All of you, for about to register for the GMAT exam, all of you can register on mba.com. It is purely free. All of you can register on mba.com. There is an exam fees of $250. That is only when you have to pay when you are taking the exam. Okay. Next thing I have covered up that it is a computer adaptive exam. You can change the venue, you can reschedule your exam. All those things are available. Okay, they will charge you a fees for this, but all these flexibilities are there. If you are going from India to, for example, you are going to France, and you are giving an exam, you want to give your exam there, you can give your exam there. You are, because of your job, you have scheduled your date. You are traveling to Bangalore, and you want to give your exam there. You can do your exam there. So all these things are available. Okay. For taking the exam, passport is mandatory. So you should have a valid and original passport to be taken to the exam center so that you can take your GMAT exam. Now, who can take the GMAT exam? The eligibility is that everyone can take the GMAT exam. Working professionals, graduates, undergraduates, everyone can take this GMAT exam. It is conducted throughout the year except on Sundays and national holidays. Lot of times students want कि एक flexibility होनी चाहिए कि मेरे पास exam जब मैं देना चाहता हूँ वो time मिले मुझे. So they are giving you that flexibility that you can take up the exam any time during the year except on Sundays and national holidays. And you're not allowed to take anything. सब कुछ बाहर ही रखेंगे. They will ask you to keep your pen, paper, everything. They will provide you the pen and paper. Before entering the exam room, there are a lot of security checks, something like an eye retina test or a palm check. So all those tests are there. So you have to complete those formalities. Okay. Now comes another flexibility in the exam. You take your exam. Okay. Before and once you just your time is over for the exam, it is going to show you your score. Okay. And this is your GMAT exam score. The actual GMAT exam score they are going to show you. Now it is up to you. They will ask you whether you want to submit this score or you want to cancel this score. Okay. If my score is less than 630, then I should cancel my score. If my score is more than 630, okay, something like 650, then I should look forward for keeping my score. Why they have given this feature of cancelling the exam is that
they would like the student, because a lot of students are slightly finicky. Agar mera exam scores comes to be less, or exam the B school knows that my score is less, so B school may ask me questions, or they may ask me to take up that why have you got such a less marks in your GMAT exam. Okay, so all such kind of queries will come. Plus, student never ever want to show that they have scored less. This is another fear factor, that if you are getting a low score, you never ever want to show, because you always want to put your best foot forward in whatever representations you want to take, so that the examiner always feel good about you. So in order to take away that fear from the student, so they have given a flexibility that you can view your score before submitting, and if you want to cancel your score, you can cancel. Once you cancel, it is just you and GMAC who know that this is your cancelled score. Okay, no one else in the world knows कि आपका score कितना आया. Now supposedly you go to the interview room, and they are not even they do not know whether you have scored 620 or 650 or whatever it is, and you just walk into the interview with your best performance, so that makes up your day. No one is saying कि score कम क्यों आया. Okay, so all those kind of questions are taken away, taken care of when you are cancelling your score, which is a low score. Okay, you can take the GMAT exam 5 times in a year. This is another good flexibility that they give. Whenever you take an exam, okay, you get your score, and if the score is not favorable, you always wish to have that, if I could have got a chance to take the exam again, काश एक मौका और मिल जाता. That is the kind of feeling the student has in their mind if the exam scores aren't favorable. So they are giving you an option of giving the exam 5 times in a year with a gap of 16 days. तो 16 दिन के बाद, जैसे आज मैंने एग्जाम दिया, and if my score is not favorable, after 16 days I can retake my exam. Okay, I can retake my exam. So this is a very good flexibility. A lot of students would like to use this and maximize their scores. Okay, and maximize their score. As I said earlier, that it opens up a lot of opportunities throughout the globe. So a lot of B schools, there are approximately 5,000 B schools across the top B schools across the globe which are accepting the GMAT score. It is not only top B schools in India, it is top B schools internationally, US, UK, Singapore, Australia, which are the favored destinations for the candidates to study and then work there. Okay, so these are the destinations wherein students would like to work. 700 and above is said to be a good score. If you're scoring 700 and above, that is said to be a good score. See, जितना ज़्यादा score लाओगे 700 से, so that is even better. A student scoring 700 is good enough to apply to a particular B school. A student scoring 740, his or her chances increases. A student scoring 770, his or her chances even increases, and also help the student to get a scholarship into a good college. Okay, so a good score is always favorable. जितना ज़्यादा आप ला सकते हो score, उतना ही ज़्यादा favorable है. हमें फायदा क्या है as because of the teaching methodology that we have followed in our country. तो ज्यादातर बच्चों ने मैथ्स बहुत पढ़ा है और जीमैट में मैथ्स का लेवल कम आता है. ओके, तो 50% ऑफ द एग्जाम इज ऑलमोस्ट इन माय फेवर कि मैं 50% एग्जाम तो मैं करके बैठा हूं. आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ, इफ यू आर फ्रॉम बीटेक और इफ यू आर स्टडीड मैथ्स इन योर ग्रेजुएशन और अप टिल 12th class, you stand an excellent chance of scoring 400 out of 400 in the quantitative ability section in the GMAT exam. जो भी मेहनत करनी है उसके बियॉन्ड, दैट इज ऑन दी वर्बल एबिलिटी सेक्शन, वो उसमें ही मेहनत करिए. तो जो बाकी का जो 50% एग्जाम है वर्बल, उसमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, एंड आई एम एबल टू एस अ वेरी गुड स्कोर इन द GMAT एग्जाम इन शॉर्ट टाइम, एंड आई कैन गेट अ 700+ स्कोर. एक और फायदा होता है GMAT एग्जाम में, that the syllabus is very well defined. Reason being, see, this exam is conducted throughout the globe. इंडिया में भी हो रहा है,
यूएस में भी हो रहा है, यूके में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, एंड द सेम एग्जाम इज कंडक्टेड. कोई अलग से कंट्री वाइज एग्जाम तो बन नहीं रहा. ओके, एंड द सेम एग्जाम इज बीइंग डिलीवर्ड. तो उन्होंने एक बुक बनाई हुई है विच इज नोन एज ऑफिशियल गाइड. ओके, दिस इज समथिंग लाइक विच इज कॉल्ड एज द बाइबल फॉर द जीमैट एग्जाम. तो इसके अंदर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन द जीमैट एग्जाम, वो सारे टाइप्स दिए हुए हैं. The only difference that lies is the level of the difficulty of the GMAT exam. Level of the difficulty of the GMAT exam means, देखो, for example, आप लोगों ने सबने reading comprehension करा in class 5th also, and then you did reading comprehensions in class 10th also, then in class 12th also. तो फर्क क्या रहा? फर्क ये रहा कि हर बार जो है एक पैसेज आता था और कुछ क्वेश्चंस आते थे, लेकिन उसका लेवल इंक्रीज हो गया क्वेश्चन का, और जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पैसेज था वो भी इंक्रीज हो गया. तो ये हुआ. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो वर्बल का जो लेवल है वो काफी टफ है. अगर आप देखना चाहेंगे कैसे हम उसका टफनेस अगर मेजर करना चाहेंगे, तो वी कैन कंपेयर इट विद समथिंग लाइक इन इंडियन एग्जाम. इंडिया में एक एग्जाम होता है कैट. ओके, जो काफी सारे बच्चे इंडिया में देते हैं फॉर देयर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. कैट में अगर देखते हैं जो मैथ्स का लेवल आता है वो 100 आता है फॉर एग्जांपल. ओके, द मोस्ट जो कैट का लेवल जो मैथ्स का होता है वो काफी टफ आता है. अब उस लेवल में इन दिस कैट एग्जाम, इफ आई कंपेयर इट विद जीमैट, तो जीमैट का जो कैट के अगेंस्ट में जो लेवल है दैट इज ओनली 60% इन द क्वांटिटेटिव. तो जीमैट का मैथ्स इजी रहा, लेकिन इसका वाइस वर्सा है इन दी वर्बल एबिलिटी सेक्शन. वर्बल में जीमैट का वर्बल इज 100 लेवल, वेयर एज कैट का लेवल इज 60 लेवल. तो दोनों में देखा जाए तो क्वांट इजी लगा, तो क्वांट हमारे को इजी लग रहा है, लेकिन वर्बल मुश्किल है. स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, उनको क्वांट भी पढ़ना पड़ता है और उनको वर्बल भी पढ़ना पड़ता है. ऐसा नहीं कि बिना वर्बल पढ़े दे वुड बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर. दे हैव टू वर्क हार्ड इन दी वर्बल एबिलिटी सेक्शन ऑल्सो. ठीक है, और जीमैट में कैट से भी ज्यादा मुश्किल आ रहा है, सो इवन हार्डर, द एग्जाम इज इवन हार्डर. तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन दी वर्बल एबिलिटी सेक्शन फॉर जीमैट. लेकिन सिंस आई हैव स्पोकन कि हमें कितना प्रिपेयर करना है, सो वी नीड टू वर्क हार्ड कि हम कम से कम 700 लेवल ले आए. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक 800. हम एटलीस्ट 700 लेवल ले आए, एंड थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो 740 टच कर जाते हैं. थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो 740 टच कर जाते हैं. तो एक बिल्कुल ही जैसे जिसको बोलते हैं 100 आउट ऑफ 100 वाली स्कोर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती. बट यस, अगर आप एक 90 परसेंटाइल या 94 परसेंटाइल भी ले आते हैं स्कोर, तो इवन द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, ओके, इंडिया में आईएसबी, द आईआईएम्स, they all are ready to accept your score. Okay, they all are ready to accept your score. Now let me move on to which kind of programs are available. Okay, so these are some of the programs that the student can do depending on their eligibility criteria. ठीक है, for anyone who is presently in college, okay, or who is a pass out, or anyone having work experience less than 2 years. So all these students are eligible to apply for a program which is known as Masters in Management Programs. Okay, Masters in Management Programs. Before I cover up one thing, I just forgot about in this slide that was on ideal time to start the GMAT prep. Okay. Now presently it is the month of June, almost getting over. So July is the month, right? Matlab we can just assume that it is 1st of July. Now 1st of July, if I want to make it to, if I'm graduating from my college in the year 2000, so I would graduate in the month of July, August 2021. Okay. Now I need to apply
to any college internationally in the month of August 2020. Okay, 1 year in advance. Okay, I have to apply 1 year in advance. So August, September, October, November, these are the application dates for the colleges. तो जो बच्चा अगले साल ओके जुलाई अगस्त 2021 में ग्रेजुएट हो रहा है, उसको इस साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 में अप्लाई करना है कॉलेजेस को. ओके, नॉट टू अप्लाई टू कॉलेजेस यू रिक्वायर योर जीमैट स्कोर. आपके पास एडवांस में आपका जीमैट का स्कोर होना चाहिए. सो द आइडियल टाइम फॉर मी टू टेक माय जीमैट if I am graduating in 2021 is that I should take my GMAT exam by September 2021. ठीक है, that I should take my GMAT exam by September 2021. Is it possible? Answer is yes. Can I prepare in 2.5-3 months? Answer is yes. GMAT में as I said कि syllabus बहुत defined है. एक book है official guide, उसी के थ्रू ही आता है. Now can I prepare for exam? Answer is yes. Should I only depend on the official guide? Answer is no. ऐसा नहीं करना. तो क्या हम कोचिंग कर सकते हैं इतने टाइम में? Answer is yes. तो 2 months of classroom plus another 15 days of practice material, आप आसानी से 2.5 महीने में अपना जीमैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं. ओके, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि इट इज वेरी हरिड, लेकिन आंसर इज दैट यू कैन प्रिपेयर ड्यूरिंग दिस 2.5-3 months में आप बड़े प्यार से अपनी जीमैट की प्रेप कर सकते हैं. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड which is MIM and the various management programs. Let me just check if there is any queries that is there. Okay, coming back to the slide. So MIM programs are the postgraduate programs, okay, in management. It is something like what we call as postgraduate diploma in management in India. काफी सारे बच्चे क्या लिखते हैं इंडिया में, they apply to IIMs for their PGDM programs. तो इसी टाइप से IIMs के PGDM programs के तरह इंटरनेशनली भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं which do not require any work experience. क्योंकि काफी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि MBA करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है या फिर मैनेजमेंट पढ़ने के लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है. आंसर इज नो. देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इंटरनेशनली which do not require any work experience and these are excellent programs. मैं अभी आपको आगे में कुछ कॉलेजेस दिखाऊंगा, उनके प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, so you would be able to understand the what kind of opportunities that are awaiting if you apply through the GMAT exam globally. Okay, then there is one kind of admission which is known as deferred admission. In deferred admission, जिस समय आप कॉलेज में हैं तो आप उस समय अप्लाई कर सकते हैं बी स्कूल्स को और कॉलेज में रह के आप एडमिशन ले सकते हैं. Then you have to work for another 2 years. After completing your work experience after your college of 2 years, then you can go on and join the B schools. तो B schools को एक मिनिमम इन प्रोग्राम्स के अंदर B schools को एक मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए होती है 2 years of work experience. These are known as deferred MBA. Okay, MIM में कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपने कॉलेज ग्रेजुएशन करा और आप ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में पढ़ने जा सकते हैं इन दी बी स्कूल्स. लेकिन डेफर्ड एमबीए प्रोग्राम्स में, ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम्स में और ई एमबीए और स्लोन प्रोग्राम्स में यू रिक्वायर वर्क एक्सपीरियंस. ओके, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं देन योर एमआईएम प्रोग्राम्स. ओके, देन मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड. What are MIM programs? Okay, so MIM programs are postgraduate programs. Okay, see the duration of these programs is 12 to 20 months. तो बहुत सारे मतलब almost 75% of these programs वो 12 months में खत्म हो जाते हैं. That means कि आपने ग्रेजुएशन करी
12 मंथ्स का एक मास्टर्स प्रोग्राम करा, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग जस्ट आफ्टर 12। तो आपको पूरा 2 साल का वेट करने की जरूरत नहीं, तो 1 साल के बाद ही यू स्टार्ट अर्निंग गुड सैलरीज। ओके, सबसे ज्यादा MIM प्रोग्राम्स करे जाते हैं यूरोप में। ओके, और उसके बाद अब देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड US और एशिया में भी ऑफ ऑल दीज MIM प्रोग्राम्स। काफी सारे बी स्कूल्स US में और एशिया में अब MIM प्रोग्राम्स ऑफर करने लगे हैं। The fees for MIM programs vary from 16,000 to 25,000 euros। देखो आप फीस देखो तो 25,000 euros जो सबसे महंगा है, तो हाउ मच इट वुड कॉस्ट अगर 80 रुपीज का 1 यूरो है। ओके, सो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 20 lakhs। तो 20 लाख रुपए का सबसे महंगा प्रोग्राम है, और 20 लाख रुपए में आपने इंटरनेशनली एक प्रोग्राम विद अ ग्लोबल एडवांटेज करा, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग in the range of $52,000 to $1 lakh की सैलरी पर annum। So amazing salaries also. I just show you some of the programs. I just increase the screen size. So these are just a second. So these are some of the programs that you can see on your screen. Masters in Management program, St. Gallen's, which is number 1 in the world. Okay, काफी बच्चों ने इसका नाम सुना नहीं है, बिकॉज अभी ऐसा नहीं है कि नया कॉलेज है, वेरी ओल्ड कॉलेज, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने खाली नाम सुना है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, ये सब नाम सुने हुए। ओके, बट सेंट गैलेंस इज अ कॉलेज, इफ यू डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस और आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, सो सेंट गैलेंस इज वन ऑफ द ड्रीम कॉलेजेस दैट यू हैव। ओके, देन इट इज HEC पेरिस, लंदन बिजनेस स्कूल, काफी बच्चों ने नाम सुना होता है, ESSEC बिजनेस स्कूल, आई स्पेन, एडेक, ग्रेनोबल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, HEC मॉन्ट्रियल। ठीक है, इनकी आपको यहाँ पे फीस भी दी गई है और इनके इंटेक्स भी दिए हुए। अगर आप लास्ट के 2 प्रोग्राम्स देखोगे, NHH और कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, इनमें कोई ट्यूशन फीस भी नहीं है, दे डू नॉट हैव इवन एनी ट्यूशन फीस। और सेंट गैलेंस की 1 साल की फीस इज 8 लाख रुपीज। तो आप 8 लाख रुपए में दुनिया के नंबर 1 प्रोग्राम में पढ़ सकते हो। एंड इफ यू टॉक अबाउट रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, so these are some of the salaries that the student get after doing schools. So you can see St. Gallen's, the average salary is $1,20,000, HEC Paris $1,20,000, London Business School $1,10,000। Excellent salaries, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कॉलेजेस भी हैं, they are also the Copenhagen Business School or NHS Norway, just after your graduation। okay, आप 1 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड यू आर फेचिंग समवेयर अराउंड $50,000 की सैलरीज। ठीक है, लेकिन इसमें यही है दैट यू कैन नॉट अप्लाई टू दीज प्रोग्राम्स वंस यू हैव मोर देन 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो टैब कहाँ पे दैट यू शुड हैव less than 2 years of work experience to apply to these programs for the MIM programs। okay, now if you have more than 2 years of work experience, then you can apply for the program। you can see the kind of recruiters that are hiring from there: Google, Microsoft, Ducati, Harley Davidson, JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley। you think about a top organization and they all are offering you programs, okay, placement from these colleges। then comes deferred MBA। deferred MBA is basically those programs in which you have to work first and then study after your work। graduation के बाद you apply when you are in graduation, after completing your graduation you have to work and then study। आपकी सीट बुक हो जाएगी ग्रेजुएशन में, कॉलेज में आपकी सीट ग्रेजुएशन में ही बुक हो जाएगी इन द बी स्कूल, but you have to work first, then you have to go on and study later। you can, if you see the kind of B schools which are offering you these deferred MBA, they are one of the world's best B schools: Harvard, Yale, Stanford, ISB, okay, Rollins, University of Buffalo, Chicago Booth। okay, so they all are offering you such programs। so top colleges are offering you such programs, और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। इंडिया से हर साल बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, they get selected into these programs। okay,
Then we move on to global MBA or the MBA programs. Now, these vary from a duration of 10 months to 24 months. Again, 10 महीने में भी हो जाता है program और 24 months में भी. But all the programs are equally placed. The 10 months program, which is offered by INSEAD, it's presently the world's #1 program. Okay. तो ड्यूरेशन से प्रोग्राम की वैल्यू का कोई लिंक नहीं है कि अगर मैं 10 महीने वाले प्रोग्राम में जाऊंगा तो वो अच्छा नहीं होगा, मैं 1 साल वाले प्रोग्राम में जाऊंगा तो वो अच्छा नहीं होगा, या 2 साल वाला प्रोग्राम ही अच्छा होता है. दैट इज जस्ट अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. द कोर्स फीस वेरीज फ्रॉम $50,000 एंड इट कैन गो अप टू $1 lakh. ओके. कुछ प्रोग्राम्स महंगे भी हैं, बट देयर आर प्रोग्राम्स विच आर रीजनेबली कॉस्ट ऑल्सो. The average salaries देखो, the average salaries are to the tune of $1,40,000 and it can go up to $1,75,000 or even $2 lakh. जिसको कहते हैं sky is the limit kind of salaries, so that are being offered by these programs. Okay, the top B schools to the likes of Harvard, Stanford, Wharton, LBS, Columbia Business School, INSEAD, IESE, HKUST, MIT. So they all are offering the MBA programs. Founders of the management programs of the world. Even the top B schools in India, they have collaborations with these colleges, something like Harvard or a Kellogg. So all the top B schools also have collaboration from these colleges. तो अगर आप IIM अहमदाबाद में जाते हैं तो आप देखोगे that you will be trained by faculties or you will be guided by people who have their experience by Harvard Business School. If you make it to ISB in India, which accepts the GMAT exam for the selection process, and ranked 27th in the world from India in the MBA programs, there the students are being taught by faculties coming from Harvard, Stanford, Wharton, Kellogg's, Chicago Booth. तो ये सब faculties आते हैं और पढ़ाते हैं students को. Okay, you can just see the salaries that they're being given. देखो salary वगैरह तो सब एक्सीलेंट मिलती है if you make it to any of the top colleges. मतलब वहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है in terms of salaries मिलना या in terms of salaries मिलना, jobs मिलना. The whole thing is about applying. सारा गेम है अप्लाई करने का. Why GMAT is giving so many flexibilities to the student? Because they want the students to apply. काफी बार स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि यार am I eligible for these particular colleges? क्या सच्ची में मैं जा सकता हूँ इस कॉलेज के अंदर में? हार्वर्ड में मैं जा सकता हूँ? ISB में कैन आई मेक इट टू? IIM अहमदाबाद में कैन आई मेक इट टू? कैन आई मेक इट टू Kellogg? कैन आई मेक इट टू सेंट गैलेंस और HEC पेरिस? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चंस रहते हैं कि am I good enough for such kind of colleges? So I am telling you, answer is yes, you are good enough. The whole thing is about first of all trying. When you try, so you automatically get a lot of people or a lot of path that helps you to make it to these colleges. देखो बैठे बैठे या अगर बिना ट्राई करे तो कोई सिलेक्शन होगा नहीं, ये चीज तो हम सबको ही क्लियर होता है. तो when you apply, so you automatically get all the insights from people that this program is happening. Okay, that this is how students are applying. So all those kinds of insights are there. So that help you lead a way towards your goal. कि भाई मेरे को अब ये चीज करनी है. This is another thing that I should have in my application in order to make my application good. So you look forward for doing that. Something like a language course. If you are making it to France and you would like to learn about, you think that French is very important, तो आप फ्रेंच सीखने भी जाओगे ना. If you plan to apply to Germany, और जर्मनी में अगर आपने सुना है कि भाई जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसका लेवल 2 आना चाहिए, तो आप जर्मन सीखने के लिए भी जाओगे. नहीं तो वैसे तो नहीं जाओगे ना कि चलो भाई मेरा मन कर रहा है जर्मन सीखने का तो मैं चले जाता हूँ. पहले यूसेज देखोगे ना और उसका एप्लीकेशन देखते हो कि हाँ भी उसका फायदा मिला तो वो चीज करने जाते हैं. तो सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग और व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम कि हाँ भाई आई कैन डू दिस एंड आई शुड अप्लाई फॉर देम. So there are a lot of opportunities that come to your mind automatically. Okay,
You can see some of the Indian B schools which are also taking the GMAT exam. ISB, IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, okay, IMI Calcutta, SP Jain, XLRI, IMT. In India, you won't believe कि CAT के बाद जो सबसे ज्यादा acceptable exam है, that is GMAT. इंडिया में CAT के बाद जो B schools exam को, that is GMAT. There are some 125 B schools in India which are accepting the GMAT score. ठीक है, कैट का स्कोर लेते हैं करीबन 160 170 कॉलेजेस और GMAT का 125 B schools. Okay, so when you are applying to a particular college, वो तो सब हुआ कॉलेजेस कहाँ हैं, when to apply, हमने सब देखा. Now to apply to a particular college तो आपको application documents चाहिए होते हैं. Okay, these make up your मतलब the overall application complete. इनके बिना आपकी application complete नहीं होती. स्कोर लाना एक पार्ट है और कॉलेज को अप्लाई करना दूसरा पार्ट है. ओके, सो कॉलेज को अप्लाई करने के लिए हमें सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, विच इंक्लूड्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आर कि आप जैसे अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो द कॉलेज, द बी स्कूल इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई अपने कॉलेज में प्रोफेसर से अपने एक LOR लिखवा के लाइए. तो व्हाट इज दिस LOR? तो LOR में प्रोफेसर और योर रिकमेंडर is going to tell कि how good a student you are. ठीक है, आपकी क्या पॉजिटिव ट्रेट्स हैं. ठीक है, आप हार्ड वर्किंग हो, आप स्मार्ट वर्कर हो, यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड, आप टाइम से आना पसंद करते हो, आप टाइम से जाना पसंद करते हो, आप बाकी सब क्लास में कैसे रहते हो, हाउ डू यू बिहेव इन योर क्लास. तो दीज आर सम ऑफ द ट्रेट्स दैट योर रिकमेंडर इज गोइंग टू talk about you in your letter of recommendation. ठीक है, similarly if you are working तो आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं आपके बॉस से आपके लिए एक LOR फेच करा जाएगा. ऑल्सो अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है अपने कॉलेज के टाइम पे या फिर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के मेंबर हैं और if you are rank holder in some society, so any professor or any of the manager who is heading that particular society or that internship, तो उनसे आपको एक LOR चाहिए होगा. So they require 2 to 3 LORs. Okay, so they want a 360-degree review about the candidate कि भाई candidate कैसा है. Okay, then they ask you statement of purpose. The statement of purpose are the most important aspects in your application. ठीक है, what does the statement of purpose carry? The statement of purpose asks the candidate कि why do you want to do this management program, कि इस management program को करने का आपका reason क्या है. ठीक है, so that reason could be your goal कि भाई मैं आगे जाके in another 5 years or 10 years down the line I want to see myself being a CEO of a particular organization, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं CEO बनना चाहता हूँ जो एशिया पैसिफिक हैंडल कर रही है, या फिर आई वॉन्ट टू हैव माई ओन एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले बहुत बच्चे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं आज की तारीख में. रीजन बीइंग मैनेजमेंट टीचेस यू टू रन योर एंटरप्रेन्योरशिप बेटर. ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो टेक्निकल नो हाउ वाले होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप्स करना चाहते हैं. ठीक है, तो टेक्निकल नो हाउ अपनी जगह पे होता है और मैनेजमेंट स्किल्स अपनी जगह पे होता है. टू रन योर एंटरप्रेन्योरशिप इन अ सक्सेसफुल वे यू रिक्वायर पीपल हु हैव गॉट मैनेजमेंट स्किल्स. तो अगर आपके पास भी अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो यू ऑल्सो हैव गुड नो हाउ हाउ टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन और योर एंटरप्रेन्योरशिप इन अ गुड वे. ठीक है, तो ये SOPs आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें स्टूडेंट को बियॉन्ड एकेडमिक्स जज करा जाता है. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, आपने अपने स्कूल टाइम पे भी देखा होगा, कॉलेज टाइम पे भी देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं. अब हमेशा फर्स्ट आना दैट शोज कि वो एकेडमिक ब्रिलियंस है उन बच्चों में.
that they have that academic brilliance. But is every student that academically strong? भाई जैसे आपने देखा कि क्रिकेट के अंदर कुछ प्लेयर्स जो बैट्समैन होते हैं वो बैटिंग करने में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट आर दे इक्वली गुड इन बॉलिंग? क्या वो बॉलिंग भी इक्वली अच्छी करते हैं? ऐसा तो नहीं है. सो एवरीवन इज हैविंग देयर ओन पर्सनालिटी, यूनिकनेस. तो आपकी यूनिकनेस क्या है? यू आर गुड इन व्हाट? हाउ डू यू वांट टू टेल टू द वर्ल्ड कि भाई देखो मेरे पास ये मेरी क्वालिटीज हैं, दिस इज what I want to do, this is how I want to use my qualities in order to succeed, in order to do well in whatever I want to do. तो वो आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिख के शो करना होता है. ओके, so there are a lot of things that student can talk about in this statement of purpose. Okay, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को काफी बार essay for application भी कहा जाता है. So these are your essays for applying. So these are your essays for applications. Then comes essay for scholarship. Then comes the essays for scholarships. So your scholarship, for example, if you are a good student and you want to do, if you are a good student, you deserve a particular job in a particular, you deserve a particular seat in a particular college. तो आप क्या करोगे? आप अप्लाई करोगे. लेकिन अगर आपके पास उतना रेलिवेंट पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई तो कर रहे हो और आपको सिलेक्शन भी मिल रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू पे दी फीस. आपके पास उतना पैसा नहीं है. तो these schools encourage students to write essays for scholarships. इन scholarships essays का फायदा क्या होता है कि कॉलेज देखता है कि स्टूडेंट ने सिलेक्शन तो ले लिया है, बट ही वांट्स सम सपोर्ट फाइनेंशियली. और उसका रीजन ये है बिकॉज उसके पास में इतने पैसे नहीं है. तो बी स्कूल्स आर रेडी टू सपोर्ट द स्टूडेंट फाइनेंशियली थ्रू एलुमनाई फंडिंग. ओके, they are also able to support you financially through some work on campus. They are also able to support you on some jobs. Okay, you are allowed to take up 16 hours per week का job when you are studying abroad. Okay, तो ये जॉब से आपको फायदा होता है that you are able to manage either your living cost or you are able to, मतलब काफी सारे बच्चे तो पूरा लिविंग कॉस्ट इसी से मैनेज कर लेते हैं, एंड यू आर एबल टू मैनेज सम पार्ट ऑफ योर एकेडमिक फीस ऑल्सो. ठीक है. Sachin has asked one question, what is the ideal length of an SOP? Sachin, usually na the B schools give you a particular word limit कि that your SOP should have this much amount of word limit. Usually जो SOP का लिमिट रहता है that is 800 words का लिमिट रहता है. कुछ बी स्कूल्स तो आपको 1200 1600 वर्ड्स के भी एसओपी मांगते हैं, which could be even 1 or which could be even 2. Okay, I hope I have cleared your query, Sachin. Moving further, they also ask for your resume. That is a normal resume. They ask for your educational transcripts. Now your educational transcripts are slightly different than your mark sheets. In your mark sheets, your school name is written, your name is written, okay, and it is issued by which board is written, and your marks. What happens in educational transcripts, these are issued by your college and your schools with their name on their letterhead, with the student name, the student address, with the person who is issuing it, and their stamp. So these are authenticated resources about and verified resources about your mark sheets. Yes, slightly advanced than a mark sheet. क्योंकि काफी बार instances आते हैं wherein students make fake mark sheets and apply.
So in order to take care of all those things, they ask for educational transcripts. Okay. Then comes is your financial documents. These financial documents are very important in terms of fetching your scholarships. If your financial documents, again, just like your scholarship essays, if your financial document says that the student is good, but he does not have relevant amount of money to pay his fees, ठीक है, तो उसको financial documents help करते हैं in getting those scholarships. Okay. And they would verify your financial documents, क्योंकि जब जिस समय आप का सिलेक्शन हो जाता है कॉलेज में और आप वीजा के लिए जाते हैं, तो all these things help you. Okay, all these financial documents are required in your visa process also. Okay. Then comes GMAT score. See, GMAT का weightage in your 20 to 25% in your application. आपके SOP का weightage is some 30 to 50% in your application. जो सबसे ज्यादा weightage है वो SOP का है, और उसके बाद GMAT का. In cumulative, GMAT and your SOP, they make up to 50 to 60% weightage in your application. तो सबसे ज्यादा important दोनों points हैं, GMAT score and your SOP. Because उसका reason है because these are your present ideas or present thoughts और your present hard work. इससे पहले काफी सारे बच्चों को during school time और during college even do not even get an idea कि अभी करना क्या है, what should I do. धीरे धीरे जैसे maturity आती है तो students start understanding कि this is what I want to do, this is where my interest lies. तो according to their interest, students start working on those areas जो उनको पसंद आते हैं. So that is where this selection process is weighing a lot on your present credentials कि आप presently क्या कर रहे हो. Then comes if you have got some work experience. अगर आपके पास work experience है, then what is the length of that work experience, what is your role, तो इन सब चीजों की वैल्यू आती है. Then work experience has some 20% weightage अगर आपके पास है. अगर आपके पास work experience नहीं है तो they are going to then judge you on your extra and co-curricular activities कि beyond your academics what else you have done. Okay, तो या तो आप academically इतने strong हैं तो that shows कि हाँ भाई ये तो 90% टाइलर ही है across, या फिर along with your academics आपने extra curriculars में क्या करा. This shows your multitasking skills, your leadership skills. तो इन सब चीजों में आपको फायदा होता है. So they even fetch you marks, give you marks for extra and co-curricular activities that you do. Any queries on this? Yes. Part I just discussed on do internships, co-curricular, extracurricular activities. They all add up to your selection process. आपने जितने अच्छे लेवल पे उसको करा है उसके हिसाब से you get point. Something like if anyone has performed, okay, or have an achievement at an international level, तो उसको ज्यादा points मिलेंगे. नेशनल पे कर रहा है तो उससे कम मिलेंगे. उसने स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पे करा है तो उससे कम मिलेंगे. यूनिवर्सिटी लेवल पे करा है तो उससे कम मिलेंगे. हाँ, इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ रैंक, सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इस टाइप के रोल्स हो गए. ठीक है. जो वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियर वालों को कम पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि वॉलंटियरिंग में ऐसा ना, वॉलंटियर अगर आया नहीं, कोई इवेंट है और वॉलंटियर आया नहीं, तो इज देयर एनीवन गोइंग टू आस्क यार ये एक्स वॉलंटियर क्यों नहीं आया? चांसेस आर लेस. हाँ, लेकिन अगर उस इवेंट का जो मेन कोऑर्डिनेटर है या जो हेड है वही नहीं आया तो एवरीवन इज गोइंग टू आस्क यार वो हेड कहाँ गया, वेयर इज दिस पर्सन, उसको बुलाओ. So that is where you should have some kind of role in what you want to do. और उससे आपको points अच्छे खासे मिलते हैं. I have seen students performing well in their college societies also and getting selections into colleges like HEC Paris, London Business School, Yale, Fuqua Duke, Chicago Booth. तो इन colleges में गए हैं because of their
ओवरऑल प्रोफाइल। जीमैट का स्कोर बहुत हाई नहीं था, जीमैट स्कोर वाज नॉट लाइक समथिंग लाइक 770 780, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा स्कोर चाहिए भी नहीं होता, प्रोफाइल चाहिए होती है कैंडिडेट की। इफ योर स्कोर इज अबाउट 700 720 730 टाइप्स है एंड यू हैव अ कंप्लीट प्रोफाइल, आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है दुनिया के बेस्ट 20 स्कूल्स में जाने का। दिस इज व्हाट आई कैन अश्योर यू एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स एवरी ईयर मेकिंग इट टू टॉप 20 स्कूल्स। ठीक है, now we see what time offers for students who want to prepare with time for the GMAT. We offer you 32 sessions, okay, which is of 2 hours each. That means cumulative was 64 hours of classroom training. Verbal, as I spoke, is slightly मुश्किल है, slightly मतलब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो verbal पे हम focus ज़्यादा करते हैं. We train students for 30 hours for verbal ability, which is 15 sessions for verbal. Quant में we train students for 22 hours, that is 11 sessions. We also give classes for IR, AW and SOP. तो overall सारी चीज़ों की classes मिलती हैं आपको, whatever is covered in the exam. After that, we also give you books for verbal, quant, IR. There are 2 books on 700 to 800 level questions. There are latest editions of official guides and the verbal OG. तो official guide मिलती है और साथ में verbal OG भी मिलती है from the GMAC, जो officially GMAC देता है. Then you also get a diagnostic test. आपकी क्लास होने से पहले diagnostic test मिलता है. You also get compensatory classes. जो आपकी बैकअप क्लासेस होती हैं वो मिलेंगी अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है. इस टाइप के सेशंस होते रहते हैं हमारे यहाँ पे सेंटर्स में. यू ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट सेशंस. जीमैट का कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट होता है. यू गेट 10 कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट एंड 8 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. प्लस यू ऑल्सो गेट सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो. दैट मीन्स पूरे सेक्शन का एक टेस्ट, क्वांट का अलग से, वर्बल का अलग से और आईआर का अलग से. तो यू गेट 30 ईच फॉर क्वांट, आईआर एंड वर्बल. तो 90 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं in this. Plus we also offer students consulting services. Okay, so these are 2 different things. One is GMAT exam prep and another is consulting services. So exam prep के साथ काफी सारे बच्चे consulting services में लेते हैं, काफी सारे बच्चे स्कोर लाने के बाद consulting services लेते हैं. Okay, so what time offers in consulting services is student profiling, shortlisting of universities. देखो इतनी बड़ी दुनिया है, ग्लोबल, इतना बड़ा है ग्लोब, तो कौन सी कंट्री में कौन सा प्रोग्राम करना है मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरे बजट के हिसाब से और मेरे स्कोर के हिसाब से, दैट बिकम्स वेरी टीडियस टास्क. तो वी हेल्प स्टूडेंट्स इन शॉर्टलिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, देयर एलओआर असिस्टेंस, एसओपी राइटिंग एंड एडिटिंग. ओके, स्कॉलरशिप ऐसे असिस्टेंस, गाइडेंस इन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन. भाई किसका फॉर्म कैसे भरना है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट हैबिचुअल बट आवर एक्सपर्ट्स आर हैबिचुअल इन इट. ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, पोस्ट इंटरव्यू प्रोसेस काफी सारी होती हैं, फीस जमा कराना कॉलेज की, देन यू हैव टू गेट द सर्विस फीस एंड योर वीजा एप्लीकेशंस, उन सब चीजों में भी मदद करते हैं. प्री डिपार्चर ओरिएंटेशंस. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस पोस्ट द जीमैट स्कोर आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ योर एडमिशन कंसल्टिंग. ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड. Let me see what are your queries. If you have got some queries, you can ask. So anyone planning to apply abroad? अभी कुछ है किसी का plan out of you? Those who are attending this session, is there anyone who is planning to apply? और किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं? Is there anything like this? Sachin, Bhavya, Rahul, Vriti, Parth, Ashi, Akshay, Rahul, is there any plan for applying to colleges abroad? Okay. Anyone, any queries? One doubt. Yeah. Yes, Parth. Sir, what's the best course? I think MIM or the other work experience courses if I want to go after graduation. After graduation, you want to go abroad. Okay. So, Parth, what are you doing presently? So I am pursuing chemical engineering. Okay. At the IP University.
हाँ, you are presently studying in your college. Okay. Yes. So for students who are studying presently, for them the MIM course are better. Reason being, see, for getting into Harvard, Stanford, Wharton types of colleges, no, you require at least 4.5, 5 years of work experience. But a lot of students do just after their graduation, they make it to an MIM program. Okay. Once you make it to an MIM program, आप एक साल में नहीं तो 1.5 साल में you are able to wrap up your studies through that MIM program. And after that you start working. Once you start working, तो आपको जो जॉब प्रोफाइल मिलती है वो अच्छी मिलती है. अभी जो मिलेगी वो ग्रेजुएट लेवल की मिलेगी. बाद में जो जॉब प्रोफाइल मिलती है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की मिलती है. ओके, यू गेट गुड रोल्स. सो वंस यू गेट गुड रोल्स, तो बेनिफिट क्या होता है? वंस यू आर देन आफ्टर 2-3 years of work experience you add up, then lot of students apply to these programs, the top ones, Harvard, Stanford, Wharton, इन सबको अप्लाई करते हैं, the Ivy League. तो once you join these, apply to Ivy Leagues, तो then you stand a excellent chance of making it too. जैसे मैं आपको इंडिया से एग्जांपल देता हूँ. इंडिया से हैव यू हर्ड अबाउट दिस पर्सन, रघुराम राजन? Yes, sir. जो पहले आरबीआई गवर्नर थे, आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह में काफी इन्वॉल्व रहते हैं. रघुराम राजन, he did his, मेरे ख्याल से he did chemical engineering only from IIT Delhi. Okay, way back in some 1980s. After that, he also did a program from IIM Ahmedabad. He worked for another 2-3 years. Okay, and then he applied for MIT Sloan. तो IIM Ahmedabad से पढ़ने के बाद उनको एक फायदा मिला कि MIT took his admission, okay, in some 3 years of work experience only. तो उनको 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ी. तो सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डज दिस. ओके, अभी रिसेंटली हमारी एक और स्टूडेंट थी, शिवानी, जिसने she did the same. Shivani applied to, she was from IIT Delhi only, and she applied to IIMS through the CAT, और उसका IIM कलकत्ता में हो गया था. And then she applied to HEC Paris. HEC Paris का ना एक तो 1 साल का प्रोग्राम होता है और एक 3 साल का प्रोग्राम होता है. तो she applied for the 3-year प्रोग्राम. तो उसके जो पहले 2 साल थे वो because she was studying into IIM Ahmedabad, तो वो waive off हो गए. तो फाइनली जो 3rd year वाला प्रोग्राम था तो उसने 1 साल वहां पे जाके भी स्टडी की. तो आई वाज हैविंग अ वर्ड विद शिवानी बिकॉज शी वाज आवर स्टूडेंट. तो मैंने उसको पूछा कि व्हाई डिड यू जॉइन हियर HEC लेटर ऑन. कहती सर IIM से तो मेरे को एक पर्टिकुलर एक अच्छा प्रोग्राम मिला पढ़ने को, अनडाउटेडली इट वाज वेरी गुड, बट HEC से मुझे ब्रांड वैल्यू मिली ऑफ एन इंटरनेशनल कॉलेज और ग्लोबल लर्निंग. So that is why I spent 1 more year into my education so that I add up to my brand value. So there are a lot of students who does this. So very cool. It is always better. अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप जितना ज्यादा प्रेजेंटली इन्वेस्ट करोगे आप उतना ही अच्छा रिटर्न पाओगे. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट राइट नाउ देन स्टार्ट अर्निंग बेटर. और जब आपको अगर कल को जरूरत लगती है कोई MBA प्रोग्राम को करने की तो आप उसको तब कर लीजिए. Thank you, sir. So one more doubt, sir. If you said one university is offering a course of 1 year also and 2 years also, both with the same value. So we are losing 1 year time, na? So sir, how do we decide कि like if the value is same, then how we decide the duration of the course? देखो काफी सारी यूनिवर्सिटीज ना अभी अपने ही एक पर्टिकुलर मोड पे चल रही हैं. मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ. इंडिया में यू हैव IIM Ahmedabad and you have another college, ISB Hyderabad. Okay, now IIM Ahmedabad and ISB, they both are at par, मतलब बिल्कुल neck to neck रहते हैं. Even IIM ABC and ISB, मतलब I would say they are neck to neck. बाकी के सारे IIMs वगैरह ये ISB से नीचे हैं रैंकिंग में. Okay, ISB is a 1-year program and IIM Ahmedabad is a 2-year program. जब बच्चे ग्रेजुएट होके निकलते हैं from these colleges, तो they are getting almost equivalent kind of job profiles और the salary packages. या फिर ISB में अगर किसी ने 4 साल नहीं तो 5 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद अगर ज्वाइन करे तो उसको बेटर मिल जाता है. तो जो लर्निंग फेज होता है इन योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, दैट इज समवेयर अराउंड 700 to 800 आवर्स ऑफ लर्निंग. वो ड्यूरेशन कॉलेज पढ़ाता है आपको. उसके बियॉन्ड देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कीप ऑन हैपनिंग. मल्टीपल थिंग्स के अंदर क्या है, देयर आर लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स. तो काफी सारे स्टूडेंट इंटर्नशिप्स या लाइव प्रोजेक्ट्स
इन सब में जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होते हैं 1 ईयर वाले, इनके अंदर इंटर्नशिप्स या लाइफ प्रोजेक्ट्स टाइप की चीज नहीं होती। इनको आप 1 साल के अंदर में एकेडमिक रिगर के साथ ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो उनमें एकेडमिक रिगर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, अदरवाइज दे आर इक्वली वेल, बोथ दी प्रोग्राम्स आर इक्वली गुड। So it depends on what point of a career we are at. What point of your career you are at, that is also that is one of the most important, क्योंकि that is where you have to decide on कि मैं MIM कर सकता हूँ या मैं MBA कर सकता हूँ या फिर मैं स्लोन प्रोग्राम करूंगा। तो अगर कोई हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जो 15 साल 20 साल के वर्क एक्सपीरियंस में बैठे होते हैं, दे जस्ट वांट टू ऐड अ टैग टू देयर प्रोफाइल, तो हम उनको स्लोन प्रोग्राम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो उनके लिए जीमैट ने भी एक एग्जाम लॉन्च करा हुआ है विच इज एन एग्जीक्यूटिव जीमैट, अ शॉर्टर एग्जामिनेशन जीमैट का 1.5 आवर्स का ही एग्जीक्यूटिव जीमैट। तो काफी सारे लोगों एग्जीक्यूटिव जीमैट दिलाते हैं उनको एंड दे अप्लाई टू कॉलेजेस। तो उनको उससे मतलब नहीं है कि मेरे को उसके बाद प्लेसमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो ऐसे प्रोग्राम। थैंक यू सर। ओके friends, any other question? Sachin? So, yes, anybody else would like to add? I'm there. Just to conclude, before anybody has any queries from sir, you might put it in the chat or might unmute yourself. Well, I think students are done with their queries. Okay, thank you very much. Query. I'm sorry. Vivek just has asked a query. Acha, Vivek. As of today, Right. your government has suspended H1B visa and H4 and various others. So there is just so much uncertainty right now, and with the international travel ban, everything isn't going to affect. ठीक है. Okay. Yes, there is a lot of right. Hello. Yes, Vivek. So there is a lot of uncertainty right now, but yes, if you make it to a top B school, the top B school takes care of all these aspects. How they take care of all these aspects is that, first thing, supposedly you were presently studying into any particular college, जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ही आप पढ़ते हैं, तो what would have happened? They would have said कि चलो यार तुम्हारा 2 साल का प्रोग्राम है, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 3 साल में कर देगा या 4 साल में कर देगा। आई थिंक दैट शुड नॉट मैटर यू मच, ऐसा तो नहीं होगा ना। So they are teaching students as of now. All the even small schools or your college even would be teaching you online for your requisite subjects. तो वो आपका वो पूरा पार्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हो इस टाइप के सेशंस भी हो रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी एडवर्सिटी आती है तो अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। ओके, हाँ, रिगार्डिंग वीजा, व्हेन यू गो देयर एंड यू स्टडी, ओके, तो यू गेट अ जे वीजा। ओके, तो जे वीजा में क्या होता है, द स्टूडेंट इज अलाउड टू स्टडी देयर एंड वंस यू ग्रेजुएट, जब आप उसी कंट्री में ग्रेजुएट करते हो एंड यू आर अ स्टूडेंट, you become a part of that fraternity, so you also get advantage in jobs. ये उन लोगों के लिए है जो H1B वीजा पे अभी जो प्रॉब्लम आई है। तो all these things are for those people who are not educated in any particular country, supposedly like US or UK. तो उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है बिकॉज दे आर देन आस्क्ड कि भाई अभी हम अपने यहाँ के लोगों को पहले जॉब सफाइज करेंगे। ये वाले इशू जो इंटरनेशनली ट्रेन्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं आती। आई थिंक दैट क्लियर्स माय पॉइंट। तो अभी तो वैसे भी आप जब अगर आप किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो अगला 1 साल नहीं तो 2 साल तो आपको कम से कम उसी में निकल जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट शुड नॉट बी द वर्ड, लॉट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स दीज डेज, क्योंकि जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं
काफी सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स में इस समय इम्पैक्ट हुआ है. तो पीपल आर प्रेजेंटली equipping themselves with good education so that they get better jobs when they graduate out. Okay, once you are graduating out you get better jobs. तो आज की तारीख में वो लोग पढ़ाई पे अपना फोकस बढ़ा रहे हैं आजकल, क्योंकि वो टाइम पढ़ाई में निकल जाएगा. जो मार्केट में इस समय टर्बुलेंस चल रही है वो सारा टाइम इस समय पढ़ाई में निकल जाएगा. And once the market or the economy start opening up, you start with a good job as a fresh mind. ठीक है? Okay, Vivek. I hope I have cleared your query. Okay. Okay, everyone. Thank you very much for being a patient listener and for the session. Thank you, Sachin. Yeah, thank you so much, sir. So before we conclude, I would like to remind everyone that this is a series of webinars of career development. And the next Wednesday, which is also being discussed in the chat also, the next Wednesday at the same time, the topic of the webinar will be GRE. And thank you so much, sir, for being here. And I would also like to thank Maninder, sir, for being there, for getting these things organized for us. All right. Our pleasure, Sachin. Thank you. Thank you very much. Thank you, Manjinder. Okay, thank you, everyone. Take care, please. Thanks, Atul. Thank you.